મણિપુર નાગાલેન્ડના લાયસન્સથી હથિયાર વેચવાના કૌભાંડમાં રોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે। હવે એટીએસની ટીમ સુરતના ગજાનન ગન હાઉસના માલિક અતુલ પટેલની પૂછપરછ કરી શકે છે। એટીએસે નાગાલેન્ડ અને મણિપુરના નકલી ગન લાયસન્સ થકી હથિયાર ખરીદવાના રાષ્ટ્રવ્યાપી કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો। આ રેકેટમાં સુરતના सूत्रधार तरीके कतारगाम में गजानन गन हाउस मालिक अतुल पटेल की पण संडोवणी बहार आई। अतुल पटेल पासेथी नकली लाइसेंस बनावी तेनी पासेथी ज हथियार खरीदनार दिलीप रॉय, कल्पेश मांगुकिया, मेरू हमीन बेलानी क्राइम ब्रांचे धरपकड़ करी छे। नकली लाइसेंसना आधारे कुल 51 हथियार वेचाया होवानो पण घटस्फोट थयो। 5 वर्षमां अनेक लोकोने 10 થી 15 लाखमां लाइसेंस वेच्यानो खुलासो थयो छे। अतुल पटेल गुनाहित इतिहास धरावे छे। तेनी सामे 2019 में अमदावाद क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्टना 3 गुना नोंधाई चूक्या छे। हाल क्राइम ब्रांचनी टीमे गजानन गन हाउसना मालिक अतुल पटेल सहित 4 आरोपीओनी पूछपरछ शरू करी छे।